Hello everyone. Well, today in this video we are going to discuss about computer networks. After a lot of thinking, I have decided that there is not much sources available on internet regarding which are basically dedicated to only IBPS SOIT means. That is why for you guys I have come up with these series. So first of all, I will be picking up computer networks because it is one of the subjects which has very high weightage in the exam. So that's why I have picked up computer networks. So without further ado, let's start. And also, I want to confess you guys that even though I have decided to make these series in English, but I feel myself that I will be better. I will be able to better explain things in Hindi because it's not about just the communication. It's about delivering the idea that what I think about certain topics and how you know, it will be easy if I communicate in Hindi for myself to make you guys understand. So even though I will be majorly I will be speaking in English, but at certain examples I will be giving them in Hindi only. So also for those who do not understand Hindi at all, I have made notes which are in English and which are very short notes. Not very short, but the notes are very good, I think. And I will be sharing the notes with you guys also. So those who do not understand Hindi do not need to worry that I will be majorly speaking English, but only certain examples I will be giving in Hindi. So let's without further ado, let's start. So let's first discuss that what I will be covering in this computer network series. I will be covering only those things which are important as far as the exam is concerned. First of all, we will go through the basic introduction and stuff, and certain things which are such as topologies and networking devices. Even though these topics are not much lengthy, but we cannot just ignore these topics and इनको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से एटलीस्ट देयर विल बी अराउंड एटलीस्ट टू क्वेश्चंस from these topics only. There will be around two questions in the exam. Then we will cover the OSI model, in which in this OSI model itself we will also be covering the protocols, TCP, UDP, and port numbers of protocols, and error control, flow control. I mean the working of data link layer in depth, and what I am saying is that we will be covering the OSI model in depth. So that majority of the computer network subject will be covered in OSI model itself. So this is the one, this is second, and third we will be covering IP addressing, in which we will learn about class based addressing, such as the IP addresses belong to class A, class B, etc. Why are they are used, why they were classified as that, and we will also be learning about subnetting. And there are certain numericals also in this in this particular topic, so we will also be covering them. And finally we will be covering miscellaneous topics, topics such as those topics which are going to be left in these three. We will be covering them in this, and we will be doing also the questions, बिकॉज कि हम कितना भी थ्योरी वाइज पढ़ लें लेकिन ऐसी काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती है जो रह ही जाती हैं और वो क्वेश्चन से ही कवर होती हैं. तो मैं जब पढ़ता था तो मैं भी ऐसे ही करता था. मैंने थ्योरी अपने कॉलेज के नोट्स पढ़े, बुक पढ़ी, रिवीजन किया वगैरह वगैरह. फिर भी सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे, थोड़े बहुत कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते थे उसी पर्टिकुलर टॉपिक में से जो मैं नहीं कर पाता था, या फिर थोड़े अलग होते थे जो मेरे थ्योरी में छूट जाते थे. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं हो पाती क्योंकि जो स्कोप है मेंस का वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आने को. तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे. क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन से ही कवर होंगी. So in this particular video, if I'll talk about this video, we will be covering this section only. So we'll just go through this section, जल्दी जल्दी इस सेक्शन से जाएंगे एंड इसको सबसे पहले निपटाएंगे ताकि हम ऐसा मॉडल पे पढ़ सकें, बिकॉज यही है इस सब्जेक्ट का हार्ट. हाँ, तो majority of the subject is going to be covered in this OSI model video itself. So without further ado, let's jump in. So there may be one question that probably is arising in your minds, is that why are we even learning computer networks? Well, it's going to come in exam, of course. That's the main reason why we are learning it here. But from life point of view, as being an IT specialist, we are supposed to know about computer networks because we may be required to
troubleshoot the networks, or we may be required to establish a network, or certain small issues that we may be required to uh, rectify them. So that's why, to be able to do so, we need to have better understanding about computer networks. uh, you know we need to have understanding about OSI models, about topologies, and about how devices works, how they internally work, and how different devices connect with each other, and how they communicate with each other. We should know all these things in order to troubleshooting or establishment or development of any network. And not only we will not only able to establish just a network, but a network which will be efficient, cost effective, and also reliable. Okay, so this was just the introduction part. Let's move on to the casting and all. So, okay, so these are the notes that I have made, guys. I will be sharing the link of this notebook. I have made these notes in OneNote, so you can just access them in your mobile, tablet, or PC. So I'll share the link of this particular notebook with you guys, and you can just see that. But I will share the link only after when I will be completed with computer networks. So right now let's just learn what we have here. So first of all comes casting, and you might have already studied that, but we are just going to be revising, and we are just going to be covering only the basics of it. Uh, so unicast is nothing but, as the name itself suggests, uni means one and casting means sharing the data. When one source is sending some data to one destination only, then it will be called as unicasting. So a basic example of this from the real world can be DMs, direct messages. And multicasting, when you need to share some data at more than one people, maybe two, three, or any n number of destinations, then it will come under multicast. And broadcast is nothing but one to all, like radio transmission. If I take some present real world example, it will be an example of Telegram group. I mean Telegram, not groups, but Telegram channels. These are both different things. So Telegram channels, what happens that only the admin is able to publish any message or any content. So what he's doing is just broadcasting some content to all the members who have joined the Telegram channel. So this will come under a broadcasting. And any cast is nothing. I have seen this topic in the book of IT officer. So it was mentioned in that book. That's why I covered in this video. Maybe there is slight chance. Maybe as the question can come from anywhere. So why should we leave it? So that's why I have picked it up. So any cast means when there is one source and the destination will be among all the destinations. Whatever destination will be the closest one to the source, the data will be transmitted only to that destination, which will be the closest. And also they are going to be have same IPs. Suppose there is one destination, there is another destination, but this destination is much closer than this one, but the data is not going to be transferred to this because it is having different IP. So the data is only going to be transferred to the nearest one, which is having the same IP. Then this case will come under any cast. So casting is done. Let's move on to the networks. Okay, so what is PAN? PAN is nothing but personal area network. अगर हम real world का example लें, so it will be mobile hotspot or Bluetooth communication. Bluetooth communication, like when you transfer file via Bluetooth from one mobile to another mobile, one device to another mobile, then this type of connection, then this type of network will come under personal area network. And the range, as you all know, as you can already guess, that the range is going to be very small. So this was personal area network. And LAN, local area network, it is nothing but a certain network, but how it is different from PAN is that its range is going to be different, and the number of devices that can be connected with each other is also higher than personal area network. You can connect from 2 to 1000 of computers in LAN, from 2 to 1000 of computers in a local area network. And this network can be wired and can be wireless. So if we take an example of wired connection, then you might have seen in your homes or offices that there is a router and the I mean wide area network cable. I mean the cable which is having internet in it is coming inside the router, and then you have different LAN cables. Or since we are taking the example of wired connection here, so this is Ethernet cable 1, Ethernet cable 2, Ethernet cable 3, and this cable is coming from the router and going into the PC1. This another cable is going into the TV1, and this another cable going to TV2. So this kind of network is a local area network, and it is a wired local area network. And another example will be wireless. So in wireless, what happens is the router is
having Wi-Fi hotspot capabilities in itself, and it is generating the hotspot. And this is also an example of our homes, uh, when we have the router, we basically do not just connect the LAN cable into the mobile, which is not possible, I guess. So we just basically connect it with Wi-Fi. And so this kind of local area network is called as wireless local area network. Nothing, it's a small thing. Okay, so the range of the local area network can be extended as per our requirement, but these can go up to around 10 kilometers. More than 10 kilometers, why would someone use a LAN practically? So MAN is just a network for a larger area, which is also going to be larger than LAN. So examples can be cable TV networks. As you guys might have known that when in our homes, जब हमारे घर में केबल टीवी कनेक्शन हुआ करते थे पहले, अभी भी होते होंगे काफ़ी, तो पहले केबल जब होती थी तो वो क्या होती थी, हर टाउन या विलेज या सिटी की अलग होती थी। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक केबल कंपनी होती थी, तो वो उन उसके पास वो सर्वर वगैरह रहते थे, और वो क्या करता था, वहाँ से ही लाइंस को सभी के घरों में पहुँचाता था। ठीक है। सो ये काइंड ऑफ नेटवर्क क्या हो गया, ये पूरी सिटी को कवर करता था एक ही बंदा, ये मतलब एक ही कंपनी, एक ही केबल कंपनी। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट। एंड एक लार्ज यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हो सकते हैं, ये बड़ा सा एक कैंपस है, यहाँ पे ये सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और सर्टेन सर्टेन डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे मान लो 5 लोकल एरिया नेटवर्क काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 3। सो इन सब का पूरा एक, यदि इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए, so it will be called as a MAN. It can be called as a MAN, metropolitan area network. So what we need to focus here is that this kind of network is for users which are situated in a specific geographical location. Specific geographical location means which are the users which are situated in a particular city, in any specific city like Delhi, Jaipur. And why we use metropolitan area network? It is for an area which is too large to be covered by a local area network. It is formed using a number of different local area networks using bridges, and yeah, I have mentioned it, how different LANs can be connected. They can be connected using bridges, or they can also be connected using gateways. We'll be studying about them later, but I have just given you some idea, guys, so you can just remember it better. Now moving on to WAN. Wide area network is the largest among all. It can cover a country or even a continent. So who uses WAN? The ISPs, the internet service providers, they have their own WAN like Geo. They have their own wide area network which is covering the whole India, and maybe there is a group of WANs which is covering the whole, Asia. Any real world example that I can think of is that in you might have seen in games or many softwares, many online softwares, that there is an option of choosing the server such as Asia or Europe or North America, South America, etc. So these are nothing but wide area networks. So these are different WANs. So this is one real world example that you can relate to, guys. मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है यहाँ पे ताकि आपको आइडिया लग सके। डिवाइस लेवल पे जब कनेक्शन होता है तो वो लैन होता है, और जब सर्टेन लैन्स कनेक्टेड होते हैं तो मैन बन जाता है, सर्टेन मैन्स कनेक्ट होते हैं तो वो वैन बन जाता है। ठीक है। सो ऐसे ये करके कनेक्शंस काम करते हैं, नेटवर्क्स। Now move on to topologies. There are many topologies: bus, star, ring, mesh, hybrid, and there is also one topology called tree topology. So in bus topology, what happens is that there is a common bus, common collision domain for all the devices, and all the devices connected to this one particular common bus. Bus is nothing but a medium of communication, medium for data transfer. It can be a wire, or it can be optical fiber cable, it can be Ethernet cable, can be anything. So this is device. These are nothing but devices. This can be a PC, this can be a phone, this can be a printer. So we will be calling these devices as network nodes. So in this there is a single bus to which these nodes are connected. So you can get an idea that expandability of these type of topologies is very easy. You just need to bring your device and get a connection and make a connection to the main bus. So the expansion is very easy, and you can also remove any device very easily. It won't affect the whole network, and it is easy to implement, easy to troubleshoot. But the downside of this type of topology is that if the main bus itself is down, then the whole network will be impacted. If there is certain issue comes into the main bus, suppose it gets broken or by any calamity, so what will happen is that
a certain number of devices is going to get affected. So it was one downside of this. Yeah, and it is cheaper to implement, easy to implement, easy to troubleshoot, and I've already mentioned these points. So example of these is a cable TV network and fiber net. What happens is that when the cable TV provider जब कोई केबल बिछाता है, सपोज आपके एरिया में, दिस इज द एरिया, दीज आर सर्टेन स्ट्रीट्स, सो सपोज ने अगर वायर यहाँ से यहाँ पे डाला हुआ है, इस एंड से इस एंड पे, और ये छोटे छोटे घर हैं लोगों के, ठीक है. सो द व्हाट द केबल टीवी प्रोवाइडर विल डू, सपोज देयर लिव्स राम एंड देयर लिव्स श्याम. If Ram asks to the cable TV network for for a connection, then what the cable TV operator will do? He just give Ram the connection from here to the nearest cable location. He will just add a connector here and he will give Ram the connection. Suppose Sham asks for a connection. Let's say he is Sham and Sham asks for a connection, then he will add a connector here to the main cable and give him a connection. So this can be an example of bus topology. And same happens fiber net. When you get a fiber connection, what happens that there is always a main line from which certain sub lines are given to the node points. जो मेन वायर होता है उसी से बाकी लाइनें बिछाई जाती हैं. सो ये एग्जांपल भी बस टोपोलॉजी का हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू द रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में कुछ नहीं, बस ये सारे डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं. मतलब एक डिवाइस जो होता है वो उसके आसपास के दो डिवाइसेस से ही कनेक्ट होता है. सपोज ये सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन है, ठीक है. सो डेटा इसमें क्या होता है कि डेटा ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. either it will go to here, either it will go clockwise or it will go anti-clockwise. Suppose in this case the data is flowing clockwise, so this is source and this is destination. So and the source wants to send a packet to this particular destination. How the data will transfer? The data will, let's first number the nodes. So the data will come from 1 and it will go to 2 first, then it will go to 3. And suppose the destination is 4, then the data will come from 1 and go to 2, then 3, then it will reach its destination. So this is, you can see that this is the downside of this type of topology. uh, it is not efficient, and if one node is down in this topology, the entire, suppose this node is down, this is not working, then the data will never reach its destination. मतलब ये नेटवर्क पूरा इम्पैक्ट हो रहा है एक नोड के खराब होने की वजह से. So the point is that this is not much efficient topology and it is rarely used presently because of its bad performance. Okay, let's move on to the mesh topology. In mesh topology, every node is connected to every other node in the network. It is costly to implement because as you can see, more and more links are there, so we need to establish all these links, which are going to obviously cost us. And though it is highly reliable, because if even though these two nodes are down, it can easily send via this particular channel, so we can say it is reliable. But the expandability of this topology is poor. Also in ring topology, the expandability is poor. You need to break this link, connect it here, connect it here. So it is a little bit poor, not much. But in mesh topology, expandability is poor. You need to make link from every other node to this new node which is added. So we can say yes, expandability is poor in this. So because of these two reasons, first of all, it is costly to implement, and poor expandability. Because of these two reasons, it is rarely used. Let's move on to star topology. Now this is the most important topology. Why? Because it is mostly used, first of all, and it is also used in banks. How it is used in banks? That there is central zone or headquarters, then all the other branches are connected to this particular zone, this particular head office. These all are connected in a star topology manner, star manner. In star topology, there is a central device. The central device can be a hub, it can be a switch, it can be a router, it can be anything. Uh, Depends on that central device. The cost of topology depends on this central device only, and expandability is very good, and cost is not much high. It is also very reliable. But the downside of this, if the central device gets failed, then the whole system gets impacted. It, it has to work properly, it has to work every time. So the cost depends on the central device.
It can be a switch, it can be a hub, it can be a repeater. We will be discussing about hub, repeater and switches further later, and it can also be even a computer. We will be discussing about hub, repeater, switches and all these networking devices further later. So let's move on to the extended star topology, or we can say its other name is tree topology. तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं, बस बस प्लस स्टार का कॉम्बिनेशन होता है, जो एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है. जो मेन स्टेम होती है वो एक मेन बस होती है. द मेन स्टेम इज मेन बस एंड द ब्रांचेस आर नथिंग बट दी स्टार टोपोलॉजी. इसमें भी एक्सपेंशन ईजी होता है एंड ट्रबल शूटिंग इज ऑल्सो ईजी, बट दिस हाईली रिलाइज ऑन द मेन केबल. इफ मेन केबल को कुछ इश्यू आता है तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाता है. सो ये था टोपोलॉजीज के बारे में गाइस. सो रिमेंबर, स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड टोपोलॉजीज में से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं. तो इतना ही जानना काफ़ी होता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने के लिए. बस आपको जैसे आइडिया लग गया है कि कौन सी टोपोलॉजी में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं और कनेक्शन के बारे में पता लग गया, तो अब आपसे वो क्वेश्चन कैसा भी पूछा आप जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल से. हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे उस चीज़ को आगे. अब डेटा फ्लो ये एक छोटा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं फटाफट. डेटा फ्लो कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स में कुछ भी नहीं होता है कि डेटा ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन. The examples can be printer, scanner, keyboard, mouse, anything. In what printer के केस में कैसे काम करता है चीज़ें कि पीसी होता है, पीसी gives signal to printer कि that print this page for me. So the data is going in one direction only. Printer can never send the signal to PC that do this for me. So the information gets flown in one direction only. And this type of communication is simplex communication. So what happens in half duplex is that data can flow in both directions, but at one time the data will flow in one direction only. The examples can be walkie talkie. जब दूसरा बोलता है तो पहले को छुपाना पड़ता है. और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एंड एट द सेम टाइम फ्लो कर सकता है, जिसका क्लासिक एग्जांपल है टेलीफोन्स एंड ऑडियो कॉल्स, जिसमें दोनों इंसान एक साथ बोल सकते हैं, दोनों को सुनाई देगा. लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसमिशन मीडियम. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई मीन तो ट्रांसमिशन मीडियम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स: वायर्ड एंड वायरलेस. वायर्ड में मेजर ट्रांसमिशन मीडियम्स क्या क्या आ सकते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल्स विच आर नथिंग बट और इथरनेट केबल्स, और कैन बी टेलीफोन केबल्स. सो these are of two types. One is unshielded, second is shielded. As you guys can see, these are shielded with some metal foil. uh, why the shielding is done? To avoid the electromagnetic interference which makes our connection better. That's why this type of shielding is done. So the another medium can be a coaxial cable. These can also be used for LAN purposes, and mostly these are used for TV cable. In these, what happens is that there is a central core which is of metal, and we have this insulator, and we have this metal braided conductor. This conductor is for durability of the cable and also to avoid interference. Nowadays, which cable is mostly used is fiber optics for our broadband connections, for our fiber internet connections in our homes and offices, mostly which have really high speed. Why these cables have high speed? Because they uses light as a medium. So the laser lights flow inside the wires, inside the small tubes, which works on the principle of total internal reflection. You guys might already know this, but let me just tell you real quickly again. So this is the source of light. So what happens is that light comes and reflected from the boundary of the cable, then again reflected, then again reflected. So in this manner the light flows from source to destination. That's how the light is getting transferred. That's how the information is getting transferred, and this is fast because as a medium we are using the light, and you guys all know that the speed of light is very high, significantly higher than electrons. That's why it is high. Even though these things are not much important, but you guys can take a look at these. इसमें जानने की क्या चीज़ है मेन की, यहाँ पे एक सेंट्रल कोर होती है फाइबर की. ये केबल की ड्यूरेबिलिटी के लिए ही होती है, ज़्यादा मुड़े वगैरह ना केबल, जिससे कि ट्यूब्स को जो ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से इनको नुकसान ना हो. एंड फिर इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक, और फिर वाटर ब्लॉकिंग की भी लेयर होती है, क्योंकि फाइबर केबल्स समुद्र वगैरह में बिछाई जाती हैं, तो इनका ड्यूरेबल होना काफ़ी ज़रूरी है. और फिर यहाँ पे मेटल की ब्रेडिंग भी होती है, मतलब काफ़ी मजबूत होती है केबल्स, क्योंकि समुद्र में एक्वेटिक एनिमल्स अगर इसको दांतों से कोई नुकसान ना पहुँचाएं वगैरह वगैरह, कोई नुकसान ना हो, ये सेफ रहे, इसलिए ये सब होता है.
लेट्स मूव ऑन टू द वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कुछ नहीं, रेडियो टावर जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एफएम रेडियो होता था पहले का, वो ब्रॉडकास्टिंग जो हो रही होती थी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको प्ले कर देता था। तो इसमें जानने और ध्यान रखने वाली क्या बात है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दीज रेडियो वेव्स रेंजेस फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, व्हिच इज वेरी लो. Now that the frequency is low, they can easily penetrate any objects or walls. अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल पर यूनिट टाइम। तो लो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैसे जाता है, ऐसे जाता है। अब सपोज दिस इज अ वॉल एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द वॉल, तो जो सिग्नल होगा वो ऐसे करके कैसे भी करके बच बचा के निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है वॉल्स को। लो फ्रीक्वेंसी में ऐसे चीज़ें काम करती हैं, एंड हाई फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐसी ऐसी होगी, साइकिल्स पर यूनिट टाइम मोर होंगी, तो पेनिट्रेशन मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब ऐसे ऐसे आएगी 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 तो इससे भी टकराएगी, तो मतलब इसके इधर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो ये रेडियो टावर्स की फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो रेडियो में क्या होता है कि रेडियो कहीं भी पकड़ लेता था, चलती हुई गाड़ियों में भी रेडियो चलता है। तो कहने का मतलब ये पेनिट्रेशन इनका बहुत इजी होता है, लो फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये थी रेडियो वेव्स। सेकंड कम्स ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यूजेस 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज, विच इज तो ऑल्सो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन उतना ही लेस हो जाता है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन उतना ही घट जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती है। so that's why bluetooth has a very small range of communication because its frequency is significantly higher than radio waves. अगेन इन केस ऑफ वाईफाई, पहले वाईफाई जो होते थे 2.5 गीगाहर्ट्ज के होते थे, इस बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे। नाउ आजकल वाईफाई में 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों यूज़ होती है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का पर्पस होता है ये, even though it is small range but it is larger than 5 gigahertz, and we can say 2.5 gigahertz for small range, 5 gigahertz for much smaller range, smaller than 2.5 gigahertz. So आपने देखा होगा आपके राउटर में जो बैंड्स होते हैं वो वाईफाई के दो होते हैं, एक तो 2.5 होता है, 5 होता है। 2.5 का पर्पस होता है हायर डिस्टेंस को कवर करना, लेकिन 2.5 में स्पीड कम हो जाती है, बट 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे डिस्टेंस स्मॉल कवर होती है लेकिन स्पीड मैक्सिमम आती है। ठीक है, बिकॉज अभी भी अपन ने ऊपर पढ़ाई है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन कम होगा। फिर आ जाती है, इसके बाद मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। सो माइक्रोवेव्स, इन माइक्रोवेव्स व्हाट हैपेंस दैट फ्रीक्वेंसी रेंज इज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो इसका माइक्रोवेव का एग्जांपल है मोबाइल टावर्स, मतलब मोबाइल टावर जो हमारे सिम वगैरह के मोबाइल टावर्स होते हैं वो माइक्रोवेव जनरेट करते हैं। एंड द अनदर एग्जांपल कैन बी सैटेलाइट डिश। जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जो सिग्नल्स जनरेट करती है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, उनको हमारा डिश एंटीना कैच करता है। कैच करने के बाद रिसीवर जो होता है यहाँ पे वो इसको कवर कैच कर लेता है, जो सिग्नल्स होते हैं इस एरिया पे जो भी सिग्नल्स होते हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होके कंसंट्रेट होके इस रिसीवर पे चले जाते हैं, और फिर वहाँ से होके आपके कोएक्सियल फाइबर केबल में होके सेट टॉप बॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव्स ही होती हैं। तो एग्जांपल्स कैन बी सैटेलाइट डिश एंड मोबाइल टावर्स। अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी वाईफाई से भी, वाईफाई की रेंज थी 5 गीगाहर्ट्ज एंड इनकी फ्रीक्वेंसी जाती है 300 गीगाहर्ट्ज तक। अब क्योंकि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनके लिए पेनिट्रेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, किसी क्राउडेड कॉलोनी में, तो घर से बाहर निकलते सिग्नल आता है, घर के अंदर घुसते सिग्नल नहीं आ रहा होता है, तो वो इसीलिए होता है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती वो फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, इंफ्रारेड सिग्नल की 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। तो इंफ्रारेड कहाँ यूज़ होता है, टीवी रिमोट्स में यूज़ होता है। पहले के फ़ोन्स आते थे, बहुत पहले के फ़ोन्स जो नोकिया वगैरह के फ़ोन्स आते थे, तो उनमें इंफ्रारेड का वो ऑप्शन हो जाता है एक, हाँ, टू सेंड एंड रिसीव इमेजेस और मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पहले इंफ्रारेड का यूज़ होता था। आजकल नहीं होता है, आजकल सिर्फ रिमोट वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये एक टॉपिक था, मैंने बुक में देखा इसको, मल्टीप्लेक्सिंग को, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ ही सकता है क्योंकि, तो इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि why multiplexing is used. Multiplexing is used when there is only a single medium present and there is only one medium present and you have more than one sources to transfer data to multiple destinations. तो उस केस में हम multiplexing यूज करते हैं। तो multiplexing में कुछ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सोर्स वन, दिस इज सोर्स टू, सोर्स थ्री। तो जो सोर्स वन सपोज रेड सिग्नल्स भेज रहा है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि उन सिग्नल्स को ऐसे टाइमली डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब
on the these signals can be divided on the basis of time, frequency और wavelength. तो इनके बेसिस पे सिंगल मीडियम पे इन इन सिग्नल्स को डिवाइड कर देता है. फॉर एग्जांपल पहले रेड भेज रहा है, फिर कुछ पार्ट्स ग्रीन का भेजा, फिर कुछ पार्ट ब्लू का भेजा, एंड जो डेस्टिनेशन के एंड पे जो होता है, रिसीवर के एंड पे एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है, वो इन सिग्नल्स को अलग अलग करके जहाँ भी जिस सिग्नल को पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचा देता है. तो मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक आइडिया यही है, मल्टीपल सिग्नल्स को सिंगल मीडियम के थ्रू मल्टीपल डेस्टिनेशन पे पहुँचाना. So multiplexing can of three types: frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and time division multiplexing. So frequency division multiplexing is done for analog signals. इसमें क्या होता है, मल्टीपल, जैसे सोर्स वन की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, सोर्स टू की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, सोर्स थ्री की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, तो ये तीनों फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन कर देता है मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, यहाँ पे ये कंबाइन हो रही है, ये फ्रीक्वेंसीज मीडियम के थ्रू फाइनली जा रही हैं, और फिर ये जाने के बाद यहाँ पे एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है जो कि तीनों डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, तीनों फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग करके. ज़्यादा डेप्थ में जाने की इस टॉपिक में ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे रियरली क्वेश्चन आता है, यदि आएगा भी तो जितना अपन पढ़ रहे हैं उससे काम हो जाएगा अपना. वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि ये वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स सिग्नल को. ये भी एनालॉग टेक्निक होती है एक, लेकिन अब क्योंकि वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद लाइट, सो इट इज़ यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. तो इसमें लाइट्स की डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को मल्टीप्लेक्सर ऐसे सिंगल मीडियम के थ्रू भेजता है, और वो डी मल्टीप्लेक्सर उनको अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि अलग अलग टाइम स्लॉट्स दे दिए जाते हैं मल्टीप्लेक्सर द्वारा हर एक सोर्स को. जैसे फॉर एग्जांपल इसको दे दिया पहला टाइम स्लॉट, फर्स्ट टाइम स्लॉट सपोज सोर्स वन को दे दिया इसने, और फिर हर तीन या चार यूनिट ऑफ टाइम के बाद इसका टर्न आएगा. तो पहला स्लॉट इसको मिला टाइम जीरो पे, फिर 4 सेकंड बाद इसको दोबारा इसका स्लॉट मिल रहा है, फिर 4 सेकंड बाद इसको दोबारा इसका स्लॉट मिल रहा है, मतलब 4 4 सेकंड के, सपोज यहाँ पे 4 4 यूनिट टाइम के स्लॉट्स डिवाइड कर दिए. तो उन टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग सभी सोर्सेज को अपना अपना टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, और फिर डीमल्टीप्लेक्सर उनको अलग अलग करके डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है. तो ये थी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो हमने अब तक कवर कर लिया कम्युनिकेशन मीडियम, मल्टीप्लेक्सिंग, एंड कास्टिंग एंड टोपोलॉजीज. सो गाइस, ये जो हमारी वीडियो थी पार्ट वन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसका 50% हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट. एंड तो इसका आधा 50%, जो रेस्ट 50% जो बचा है उसके अंदर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसमें कि हम देखेंगे राउटर राउटर के बारे में, हब्स, स्विचेस एंड गेटवेज एंड ब्रिजेस. तो इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसके अंदर से भी एक दो क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं गाइस. सो दैट्स वाई वी विल cover them in the next video. So till then, see you see you guys, and I wish you best of luck for your exams, and I hope you are putting your 100% effort in preparation. So keep putting that. Till then, I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.